حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. A man asked the Prophet, what sort of deeds or what qualities of Islam are good? The Prophet replied, to feed the poor and greet those whom you know and those whom you do not know. See Hadith number 27. हमसे हदीस बयान की उमर बन खालिद ने, इनको लैस ने, वो रवायत करते हैं यजीद से, वो अबू खैर से, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि एक दिन एक आदमी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज़ सबको सलाम करो।